that people endured. My father once told me, "It's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief." These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer, and my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. A very good evening to all of you in this live interactive session of ours, and a very good morning to all our international viewers. So, we, as always promised, connect with you on Wednesdays, and I always try to answer the maximum of your questions along with discussing some important topics with you. So, today also, I would be starting with the questions. First of all, there are questions which are over here. There is a first question through Alam. Mr. Alam, you have mentioned about your 2 years old child without the mobile. You have mentioned, I'll be reading out your question. My 2-year-old child without give mobile rhymes. He doesn't eat food, so I can give mobile while he is having food. He's 2 years, 4 month old, too much hyperactive and still not yet sentences. LMG, I would like to tell you that, see, as far as mobile is concerned, definitely when we talk about mobile phones, they have really created havoc for children in today's era. And sometimes we feel that eating meal is important and we prefer giving the child a mobile or playing a TV for our child because he's not taking his meals. But honestly speaking, that is one of the worst things that we can do for the child, because when a child starts going in the virtual mobile world, it really becomes tough for the child to come out of that world. So my suggestion to you is, please try with some other methods. If you want, the helpline is there in front of you. Our team can guide you with certain methods on how we can wean off him from mobile phone, but avoid it. Specifically when he is to be taking meals, it needs to be avoided. And I would like to tell you that the question, if it is in Hindi, I'll be replying in Hindi. If it's in English, I'll be replying in English. So whichever language you are comfortable in, please write in that language. So next is रवि प्रसाद जी, आपने लिखा है कि मेरा 11 साल का बेटा है और उसकी समझदारी आगे एज के मुताबिक नहीं है, स्टडी में भी बहुत कमजोर है, कुछ भी बात याद नहीं रखता है। तो मैं चाहूंगा रवि जी, एक तो थोड़ा सा आप इस केस में ये बताएं मुझे, जैसे आपने बताया है कि उसकी समझदारी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर किसी प्रकार का असेसमेंट आपने करवाया है अब तक, तो मुझे प्लीज थोड़ा सा बताएं कि उसकी समझदारी को डॉक्टर्स ने कहाँ ग्रेड किया है, किस एज के अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रेड किया है, अगर आपके पास है। और अगर ऐसा कोई एनालिसिस नहीं हुआ है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे एनालिसिस को करने के लिए हम लोग कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप एक बार कनेक्ट करवाइए टीम के साथ ताकि हम ये देख पाएं कि ये एग्जैक्टली कितना गैप है, कितना डिफरेंस है आपके बेटे के केस में समझदारी में, जितना होना चाहिए उससे। कई बार क्या होता है, देखिए, ग्रेडिंग बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि उतना गैप नहीं होता। मान लीजिए आज मैं आपको बोलता हूं कि रवि जी एक ना गाना सुना दीजिए, अब आप आगे से कहते हैं कि मैं गाना नहीं सुनाऊंगा। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, एक कि आपको गाना गाना नहीं आता और दूसरा कि आपका गाना गाने का मन नहीं है। सो केवल आपके ना करने से या एक चीज को ना कर पाने से कभी भी ये जज नहीं किया जा सकता प्रॉपरली कि क्या आप वो चीज करने में सक्षम है
या नहीं है। सो यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है कि हम असेसमेंट प्रॉपर जरूर करवाएं। सो अगर आपने ऐसी कोई असेसमेंट करवाई है तब भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं वहाँ असेसमेंट शेयर कीजिए। और अगर ऐसी किसी प्रकार की असेसमेंट आपने नहीं कराई है तो मेरी आपसे विनती है आप कनेक्ट कीजिए, एक बार हम असेस कर लें ताकि हम ये देख सकें कि क्या वाकई में ही गैप है और है तो कितना है। डेफिनेटली अगर गैप है, आयुर्वेद में ऐसे बहुत से मिथ्य रसायन हैं जो इस्तेमाल करने से जो आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंस है, बढ़ती है और बड़ी क्विकली बढ़ती है। तो उसका इस्तेमाल अगर जरूरी होगा तो डेफिनेटली हम बेटे के केस में करवाएंगे, आपको बताया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूं वो है कि आपने नाम लिखा है, पेशेंट कोड लिखा है ताइबा जी, लेकिन वहां पर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो ताइबा जी के केस में अगर उनके कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हैं, जी हमारे साथ हैं ताइबा जी, रजत जी आपके कोऑर्डिनेटर हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि यूएई से आप जुड़ी हैं, एज 2.8 ईयर्स है जाकिरैया जी की, और ही इज फेसिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पीच डिले है, बिहेवियर डिसऑर्डर है। तो यहां मैं बताना चाहूंगा, देखिए सबसे बड़ी चीज तो यह है कि 2.8 ईयर्स पे बहुत अच्छा किया आपने कि उसकी कंडीशन को सीरियसली लिया है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये वो एज है जिस एज के ऊपर की अगर हम बात करते हैं एक रिफ्लेक्स लर्निंग एज है। देखिए कुदरत ने, उस परवरदिगार ने हमें एक एज दी है जिस एज के अंदर अगर सही प्रकार से सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की कोऑर्डिनेशन होगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लैंग्वेज सीख लेगा जहां वो रहता है, वहां की लोकल लैंग्वेज। उसके लिए कोई बहुत स्पेशल टेक्निक्स, कोई ओटी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अक्सर देखा यह जाता है कि उस एज को पेरेंट्स वेट करने में गवा देते हैं कि कोई बात नहीं है, अभी तो बच्चा छोटा है, धीरे धीरे खुद ब खुद सीख जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकता, सीख भी सकता है, लेकिन बहुत से केसेस में जहां वो एज निकल जाती है वहीं बाद में अधिक समय लगता है ठीक करने के लिए। सो आपने बहुत अच्छा किया जी, आपने कनेक्ट किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा रजत, आप प्लीज नोट करें क्योंकि अभी ये 4 साल से छोटी है। सो अगर हाइपर एक्टिविटी हमें अधिक देखने को नहीं मिल रही है, एक तो इमीडिएटली इनका एबीए अप्लाइड बिहेवियर एप्लीकेशन के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करवाएं, क्योंकि कुछ बदलाव, कुछ चीजें हमें पेरेंट्स के एंड से करनी पड़ेंगी, सिखाना पड़ेगा उनको, ताकि एक नीड क्रिएट हो बेटे के अंदर बोलने की। देखिए बोलना एक नीड बेस्ड चीज है। आज अगर बच्चे को पता है कि मेरे बोलने से मुझे चीज जल्दी मिलेगी तो वो बोलेगा, लेकिन ये बड़े टेक्निक से करना होता है। बच्चे को बिना ऑर्डर किए हुए करना होता है, दिखा के करना होता है, जतला के करना होता है। इसी को बोलते हैं अप्लाइड बिहेवियर एप्लीकेशन थ्रू पेरेंट्स, जो आपको सिखाया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं हर्ब्स की, तो रजत केवल 2 चीजें ही सफिशिएंट हैं एज को ध्यान में रखते, एक तो ब्रेनो ए और एक उसके साथ साथ मुक्ता पिष्टी। ब्रेनो आर नाइट में केवल तभी यूज करनी है अगर हमें हाइपर एक्टिविटी लग रही है, वरना उसकी जरूरत अभी नहीं है। मैं इसके साथ ये भी चाहूंगा कि अगर आप कर सकते हैं तो एक छोटा सा वीडियो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए बेटे का, उससे भी और बहुत फायदा होता है। I have been just updated by Rajat that all the guidelines which you require are required in English, but since the number of questions are more and I went through a Hindi guidance, so on my behalf, Rajat will be translating everything which I just guided, and he will be communicating it to you during this live itself. And if there are some questions in regards of what I just guided, Rajat, I would love to answer those questions also. So please explain and translate it for her. Now coming to the next question. I'm coming to the next question now. The next question which I can see is let me scroll through the questions and yes. So आपने लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सर प्लीज बताएं कि शिरोपिचू कितने दिन तक कंटिन्यू करना चाहिए। मैं एक शिरोपिचू की अगर हम बात करते हैं, देखिए शिरोपिचू जब तक ऑटिज्म का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं उसका बहुत लाभ है, जितना फ्रीक्वेंटली आप करेंगे। आप सोचिए किसी जमाने में, आज अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं,
थोड़े साल नहीं, 20 साल 25 साल, हमारी दादियां, हमारी नानियां हमारे सर के इस भाग पे ना रेगुलर पैटिंग किया करती थी ऑयल की, क्योंकि यहाँ ब्रह्मरंध्र रहता है और ब्रह्मरंध्र में नरिशमेंट, तर्पण ऑयल के साथ करने का बहुत लाभ मिलता है। तो शिरोपिचु तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी समय पर हर घर का हिस्सा हुआ करती थी। समय बीता, आज मेरे बाल भी आपको ड्राई नजर आ रहे होंगे और आप लोग भी जनरली ड्राई रखते होंगे। ऑयल लगाने का कल्चर कुछ घट गया है और कहीं ना कहीं वो तर्पण जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। सो शिरोपिचु तो बहुत लाभकारी चीज है, इसे जितना रेगुलरली आप कर पाए उतना लाभकारी है। हाँ, ऑयल्स अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार के अच्छे होते हैं। जब ऋतु बदलती है आप ऑयल चेंज करवा सकते हैं शिरोपिचु के लिए। बाकी आप पेशेंट कोड भी अगर मेंशन करते जाएंगे अपना, तो हम और अधिक तरीके से अच्छे से आपको अपने डॉक्टर्स के थ्रू भी रिप्लाई करवा पाएंगे। नेक्स्ट दीपा गुप्ता जी, आप लिखा है, हेलो सर, Shubh is 7 plus and non-verbal. He's not hyper. Understanding is good, but identifying not good. Will he be able to communicate with us? So, Deepaji, I would like to have some further details in regards of Shubh. Please share a small video with us. See, he's 7 plus. He's non-verbal, but he again is not hyperactive. And the best part is that you have mentioned that his understanding in his case is good. So, if the understanding of a child is good and if a child is communicating with you without language, he's understanding, he's following your commands, definitely with the usage of right kind of ABA and by usage of orientation promoting herbs, which improve the working capabilities of the subconscious mind, we can bring a child like Shubh at a stage where he is using proper words. So do not worry. Just share some details further in his regards and he will be able to communicate, Deepaji. Don't worry. We still have ample time. See, till 12, 13 years of age, a child is still at a trainable age. Below 4 years of age, it is the reflex learning age. One of the best ages. There, the improvement is the quickest. But once we cross a age of 4 years till 12 years, it's still a trainable age. So just let me come to the next question now. So yeah, so coming to the next question now. The next question is from Jai Shri ji. What have you changed in SL care as price has increased? Jai Shri ji, don't know much about it. See, I can guide about everything. To be honest, I have no control. I don't take care of any of the things. From my end, though, you can always take any kind of guidances wherever is required. I can understand if you're taking something and the price has gone up. Yes, definitely it must be disturbing for you, but I don't know much about it. I won't be able to comment on that. And I even don't know if something has changed, to be honest. And next, the next question is from Deepaji, and then the next question, the fifth one. There are certain comments which are very motivational for us. We really appreciate your encouragements, your good words about us, but I'm preferring to take direct questions rather than taking any kind of comments. I'm missing out the positive comments so that I can take more of questions from your end. So coming to the next question now. The next question which I can see is, Rajat, you have, I hope you have explained everything. I can see the question coming my way, but I have updated certain things. It's only the Breno A and then Mukta Pishti which we had to use in his case. And then I can go to the next question. It is the seventh question now, team. Please show the seventh question to me. It is from Anand Bharji. थैंक यू सर, मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट आपके यहाँ से चल रहा है. थैंक्स अ लॉट. आई वोंट बी गोइंग थ्रू द कंप्लीट डिटेल्स. Thanks a lot. Your appreciation really means a lot.
if any problem is there, I would definitely be guiding in that regards of the problem also. Coming to the eighth one now. The eighth one. The eighth question now is from Mr. Bashir. Please, doctor, my son is 4 and still not speaking. He has no diagnosis. We have been assessed twice. He repeats what you say, that is, echolalia is there. And though not very clearly, and he understands words and commands. What are your suggestions? You have shared your code. My son Ayan use words, but only one time. No repetition, and also he doesn't eat anything every time I force him. Very much understandable, Mr. Bashir. And definitely, when a child is not using the words like we want him to use, uh, it is a troublesome thing for the parents. Please take it very seriously. Don't tag him with any disease as of such. See, we people are nowadays in a habit of tagging the name of a disease with the child. It is not at all important for us to tag a particular disease with your child. What is more important is, first of all, we need to be very sure that you are creating ample situations for him where he is forced to use those words. Now, that can be assessed once our psychotherapists speak with you and they are shared some videos where they can see on how much work and efforts you are putting on your child in that regards. That is the ABA part. And the second thing, yes, we definitely can use some herbs like Acorus calamus and others which potentiate the word speaking capabilities, because you just mentioned that he repeats what you say. This means he has words in his mind. It's only that when those words are required, he is not using the right kind of words. Team, it is my request, please do not miss out on numbering any of the questions. There are questions जो मुझे लगता है कि वो मिस हो सकते हैं. मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन क्वेश्चन, एंड coordinators are requested to go by the numbering of the questions. So when the number of the question is spoken out, please give all the details in that regards. Please do not miss out, mix out the questions over there. Now coming to the next question now, and the next question, the ninth number is the ninth number question. The numbering is ninth one. Yes. So it is, we are sorry to hear, yes, there is a question whose experience has not been good. I would like to see that. हम किसकी बात कर रहे हैं? Please share कीजिए. So I cannot find a question. Please एक बार आप दोबारा पोस्ट कीजिए मैम. The ninth question, शोभा गुप्ता जी का शायद एक क्वेश्चन है. प्लीज आप डिटेल्स में मेंशन कीजिए. नाइन्थ के बाद शोभा गुप्ता जी आपने पेशेंट कोड शेयर कर दिया है अपना. टीम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस को इतना क्विकली आप लोग स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि आपकी इतनी क्विक स्क्रॉलिंग से मैं कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं देख पाऊंगा और रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा अच्छे से. तो जो शोभा जी का क्वेश्चन है वही मुझे प्लीज शेयर कीजिए. एंड पीहू जी आपने मेंशन किया है, सर मेरी बेटी 2 साल की है, वो सेरेब्रल पैल्सी है, उसका राइट हैंड वर्क नहीं करता, उसके शोल्डर और कोनी टिल्ट हैं, प्लीज हेल्प करें. पीयू जी बिल्कुल चिंता मत लगाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार बिटिया का एक छोटा सा वीडियो हमें भेज दीजिए, क्योंकि उसके केस में सेरेब्रल पैल्सी है. अगर आपने कोई एमआरआई करवाया है, वो एमआरआई भी हमारे पास आप शेयर कीजिए. कुछ छोटे छोटे से मेथड्स हम आपको गाइड करेंगे, कुछ खास तरह के ऑयल्स और कुछ खास तरह से उन ऑयल्स को लगाने के मेथड्स, कुछ पंचकर्मा की विधियां आपकी बिटिया के लिए बड़ी अच्छी हैं. सेरेब्रल पैल्सी के अंदर 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक माइंड वाला एस्पेक्ट और एक बॉडी में मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला एस्पेक्ट. हम दोनों एस्पेक्ट्स के अंदर आपको गाइड करेंगे, बट प्लीज डिटेल्स आप सारी की सारी जो है वो शेयर कर दीजिए, ताकि आपको बढ़िया से हम गाइड कर सकें. और वीडियो जरूर शेयर कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज शेयर कीजिए टीम. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन टीम, माफी चाहूंगा जी, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज के कारण जो टीम है वो आपके क्वेश्चंस को सही समय पर मुझ तक नहीं पहुंचा पा रही है. सो मैं खुद ही ट्राई करता हूं कि क्वेश्चंस आपके कोई मिस नहीं हो और मेरे एंड से ही आपके क्वेश्चंस को रीड आउट कर लिया जाए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
जी 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 जी, शोभा जी मेरे पास अब आ गया कि आपका जो चैलेंज आ रहा है। मैं ये चाहूँगा शोभा जी, बिना समय गवाए हुए आपको ये चाहिए है कि आप एक बार आके मिलें ज़रूर। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहती है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है आपने, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं मैम, हम किसी के केस में भी अगर आयुर्वेद इस्तेमाल करते हैं, इसे मल्टीपल बार चॉपिंग और चेंजिंग नहीं करवानी है। अब होता क्या है मैम, देखिए हर व्यक्ति का, हर डॉक्टर का अपना एक सोचने का नज़रिया और एक सोचने का अंदाज है। अगर आज मैं अपनी टीम की बात भी करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे पेशेंट्स जो हैं ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली मेरे अंडर ट्रीटमेंट करवाते हैं, मुझे मिलते हैं, मैं अपने तरीके से उनका इलाज करता हूँ। और 70 से 80% पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें मैं नहीं मिल पाता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत अधिक होते हैं, जिनको टीम में अलग अलग तरह के डॉक्टर्स मिलते हैं और वो डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम लोगों को आजकल एक आदत डल चुकी है कि हम लोग क्या करते हैं, हमें एलोपैथिक खाने की आदत है। हमने आज क्रोसिन खाई, उसके कुछ घंटों के बाद फीवर उतर जाएगा। हमने आज कोई भी एक चीज़ ली, हम एक्सपेक्ट करेंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में कोई वो रिजल्ट्स दे। आयुर्वेद ऐसा नहीं है मैम, और खास तौर पे ऑटिज्म में तो आयुर्वेद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आयुर्वेद ने जो भी बदलाव मन के अंदर लाने हैं, आप सोचिए, मन तो एक ऐसी चीज है कि अगर आप एलोपैथी के अंदर भी आज एक डिप्रेशन की दवाई खाती हैं या मानसिक स्तर पर कोई बदलाव लाने वाली दवाई खाती हैं, तो एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आपको बताएंगे कि देखिए ये दवाइयाँ 1.5 से 2 महीने के अंदर आपके माइंड के अंदर परिवर्तन दिखाना शुरू करेंगी। सो ठीक इसी प्रकार से जब हम आयुर्वेद इस्तेमाल करते हैं, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन मिस्टर आलम। योर क्वेश्चन वाज इन फैक्ट द फर्स्ट क्वेश्चन which I had over here in today's live. Just give me few moments and I'll be replying your question in English only. The next question will be taken from you only. So तो अभी जब हम आयुर्वेद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आयुर्वेद एक ऐसी, कह लीजिए, चिकित्सा पद्धति है जिसमें मन में बदलाव लाने के लिए अगर आप मेरे से इलाज करवा रहे हैं तो मुझे अनइंटरप्टेड बिना चेंज के दवाइयाँ सेम रखते हुए एटलीस्ट 6 महीने, मैं इसीलिए हमेशा 6 मंथ्स का प्रोटोकॉल चलाता हूँ अपने पेशेंट्स के केस में, जहाँ ABA और जो मैं आयुर्वेद गाइड करता हूँ वो मैं पेशेंट को लेने के लिए बोलता हूँ। और बहुत बार, सिर्फ आपके केस में नहीं, आदत क्योंकि एलोपैथी की है, हम लोग हेल्पलाइंस पे कॉल करेंगे, कोई दूसरा डॉक्टर उठाएगा, हम कुछ चीज़ बताएंगे, अगर हम अपना पैनिक शो करेंगे तो डॉक्टर उसे बदल देगा। सो एक तो मेरी आपसे बेनती है, किसी भी कीमत पे मल्टीपल चॉपिंग चेंजिंग मत कराइए दवाइयों की, अगर मेरे अंडर इलाज चल रहा है। और अगर किसी भी डॉक्टर को हमारे यहाँ से चल रहा है, हर बार उसी डॉक्टर से बात कीजिए, तो आप एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छे रिजल्ट देख पाएंगे। बाकी मैम ये डेफिनेट है कि अगर ऑटिज्म में हमें लगे कि ये एक ऐसा केस है जहां रिकवरी हम नहीं दे सकते, हम हमेशा प्रेफर करते हैं इलाज ही ना करना। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार कंप्लीट डिटेल्स हेल्पलाइन नंबर पे शेयर कीजिए ताकि आपको गाइड किया जा सके। सो मिस्टर एलम, if I give mobile rhymes, yeah. I was talking about your question only. And team, it's again a request. Please don't so quickly scroll through the messages. It gives a lot of problem for me. I request you, please do not scroll it so quickly. And if we give mobile rhymes to my son while having food, is okay. I just mentioned, you might not be over here, that in any case, we are to avoid giving mobile phone for the sake of making him eat. No, we are not to give it. We are to use alternative methods. Here, puppets, light, sounds can be used, and my team will be more than willing to guide you in that regards. So please share some details where my team can provide you some further insights into what needs to be done. And next, I'm coming to the next question now. And the next question is from Shilpa Reji. सर मैं भागलपुर बिहार से बोल रही हूँ। सर मेरी बेटी 9 साल की है और वो खुद में बहुत हंसती है, खुद से बातें करती है और बहुत हाइपर है। उसकी समझ एज के मुताबिक बहुत कम है, वो 9 इयर्स की है। शिल्पा जी देखिए, एक तो थोड़ा सा वीडियो शेयर कीजिए जब वो आपको लगे कि अपने आप से हंस रही हो, अपने आप से बातें कर रही हो। बाकी होता क्या है शिल्पा जी, देखिए अपने आप में जब कभी भी हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, खुद से हम में से हर किसी को अपने आप से कुछ कुछ बातें करने की आदत तो होती है।
हम लोग जब समझदार हो जाते हैं तो मन के अंदर वो बातें करते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मन की जगह पे जहां पर उतना बढ़िया कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो वही बातें हम जोर से भी कर सकते हैं। हम में से कई बार हम कुछ खूबसूरत लम्हे, कुछ अच्छी चीजें सोच करके मुस्कुरा भी सकते हैं, गमगीन भी हो सकते हैं, लेकिन अगेन जहां पर कॉन्शियस सबकॉन्शियस कोऑर्डिनेशन उतनी नहीं है, वहां पर हमारे एक्शंस बड़े नॉन जस्टिफाइबल से और बड़े डिफरेंट से लगेंगे देखने वाले को। सो बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना। सो मैं यहाँ पे ये चाहूंगा आपके केस में कि कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जिन्हें ओरिएंटेशन प्रमोटिंग हर्ब्स बोलते हैं। ओरिएंटेशन प्रमोटिंग हर्ब्स कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की कोऑर्डिनेशन को बढ़ाती हैं। तो आप बिटिया की कुछ डिटेल्स हमारे हेल्पलाइन नंबर पे शेयर कर दीजिए। ओरिएंटेशन प्रमोटिंग हर्ब जनरली हम ब्रेनो आर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी बिटिया के केस में यूज किया जा सकता है। कुछ छोटी छोटी सी एबीए की टेक्निक्स होती हैं जो हमने पेरेंट्स को सिखानी होती हैं कि जब बच्चा इस तरह से कर रहा हो तो आपको उस समय क्या करना है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या हो जाता है, बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करना। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप कुछ वीडियोस अपनी बिटिया के जरूर शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं अब, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 12th नंबर क्वेश्चन। हाय सर, दिस इज रिजवाना। मेरी बेटी को 2 ईयर से ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत इंप्रूवमेंट है। दैट्स रियली ग्रेट टू नो रिजवाना जी। इंशाल्लाह और बेटर वो होती चली जाएगी बिटिया। नाउ कमिंग टू द 13th नंबर क्वेश्चन। 13th नंबर पे हमारे पास है माफी चाहूंगा जी, क्वेश्चंस अधिक होने के कारण कई बार स्क्रॉल करते करते वो क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तो वो जो आपका क्वेश्चन होता है वो तब तक निकल जाता है। माय डॉटर हैज ऑटिज्म, इट्स फ्रॉम वीना जी, and GDD, she is non-verbal, she is 6 years. We have started your treatment, show positive in 1 month, but her gut issues have started. What medicine is to be given? Her skin is dry. Veena ji, add babuna drops. There are gut issues in many autistic kids. For those, we use babuna drops and enzyme. Enzyme in the afternoon and babuna drops at night can be used. But to be honest, these two things, in what dosage and exactly, for that your patient code and entire details are very must. So please contact on the helpline and then they will be guiding you on how to start these things. And going ahead further to the next question. Team, please share the next question with me. Next question we are coming to, and by the time I'm also checking out if your coordinators have shared some details in your regards with me. So no, there are no such details. So I'm going to the next question now. 14th question we are going to now, and please excuse me, I'm taking a bit of time in scrolling down. Unluckily, my team, which was there with me to help me out with the questions, is not one of them has lost contact with us, and that is why I'm scrolling down with the questions. Yeah, Gagandeep ji. So that's really good. You have asked about how much time it will take. He will start to make eye contacts. For eye contact improvement, please do not forget that ABA is to be done in a very essential way. And going further to the next question. So the next question over here is from Parminder ji. You have mentioned that, hi, my son is autistic. He diagnosed with autism at the age of 2 years. Now, what are the medicine Breno are concentrated and Mukta Pishti? Parminder ji, please share some videos of the child. And please don't forget, our treatment is not just Ayurveda, but Ayurveda and psychotherapy combined. If you really want your child to be quickly out of autism, which he can be, it is very important for all of us that you are taking care of both the aspects of our treatment, the Ayurveda as well as the psychotherapy part. Please don't forget on those aspects. So coming on the next question, Surya ji, my 3.6 years daughter is very hyperactive. Suddenly she burst with anger. Eye contact is good, but she's very stubborn. She can express with what she wants, but doesn't
already follows doesn't always follow our commands. So team, I would further request you to stop posting questions because you are posting questions, so the questions which I am taking are missing out on that. So that is causing a lot of trouble for me and for the patients also. So going ahead further, see, I was talking about the question. I'll again be going on those questions and unluckily a lot of questions. Yes, Neelam ji. So we were talking about, no, not, it was not Neelam ji, it was, yes, Surya English tutorials, that she burst with anger. So sir, what exactly we need to do over here is that, see, in children where the age is below 4 years and below 4 years of age, the child is facing problems. Now what happens exactly over there is that the reflex learning age of the child, now that reflex learning age of the child is still there at that age. So it's very important to control the behavior pattern of the child merely by training of parents. The child is very observant at this age. If we use the right kind of techniques with the child, even with the usage of lesser number of herbs, the results are very quick to come in a child when we need to change the behavior of the child below 4 years of age. So again, as I just mentioned, a small video of your child, specifically in the tantrum phase. And if we talk about herbs, very few herbs to be used and a bit of ABA. Sometimes what happens is we are unluckily potentiating and giving positive reinforcement to the behavior pattern of our child, which we actually do not want the child to be doing. So unluckily, at times we are basically giving a positive reinforcement to that behavior pattern. That is what we need to train you, that how you can avoid that behavior. जाने अनजाने में जो बिहेवियर हम चाहते हैं कि बच्चा ना करे, वही बिहेवियर हम लोग कर रहे होते हैं। तो उसी कारण से जो प्रॉब्लम सारी आ रही होती है। मैं एक साथ के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है दैट इज फ्रॉम नीलम कुकिंग जी। सर, मेरा बेटा का 1 ईयर से आपके यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है, वो 3.5 ईयर्स का है अभी एंड कुछ 30-40 वर्ड्स भी बोलता है। कब तक ठीक हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा और आप बता सकते हैं? तो नीलम जी प्लीज़ आप क्या कहते हैं डिटेल्स शेयर कर दीजिए हमारे साथ। जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट किया पहले भी कि पेशेंट कोड अगर आपका आ जाता है तो मैं और बढ़िया से आपको जानकारी दे पाऊंगा ताकि मुझे एग्जैक्ट डिटेल का पता हो। अनलकीली क्योंकि हम इवनिंग में अभी अब लाइव कर रहे हैं तो बहुत से कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटर्स हमारे पास अवेलेबल ना होने के कारण आपके वाले जो मॉर्निंग शिफ्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, बिकॉज दिस लाइव स्पेसिफिकली इज फॉर द इंटरनेशनल पेशेंट्स, सो एट टाइम्स सिंस योर कोऑर्डिनेटर्स माइट नॉट बी देयर, तो वो डिटेल्स आपके बिहाफ पे मुझे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से एक बार आप अगर ये सपोर्ट कर देती हैं कि हेल्पलाइन के ऊपर आप कुछ डिटेल शेयर कर दें तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सदानंद जी आपने, और बाकी चिंता मत लगाएं मैम, 3.5 ईयर्स का क्योंकि वो है, 4 साल से जो छोटे वाले बच्चे हैं जैसा कि मैंने बताया उनमें तो बहुत क्विक इंप्रूवमेंट आती है उनके केस में, क्योंकि रिफ्लेक्स लर्निंग एज है। सदन कुमार जी आप लिखा है सदन हेयर फ्रॉम पटना, सर मेरा बच्चा 7 ईयर का है बट समझ कम है, और मैंने अभी रिक्वेस्ट किया था टीम आपसे, मेरी एक बार फिर दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप क्वेश्चंस पोस्ट मत कीजिए। आपके क्वेश्चन पोस्ट करने के कारण जिन पेशेंट्स के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं वो हम नहीं ले पा रहे हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है टीम से, प्लीज आप क्वेश्चंस को पोस्ट मत कीजिए। उस वजह से हम जो क्वेश्चंस ले सकते हैं पेशेंट्स के, अनलकीली हम उनको जानकारी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक हैं। जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं आप प्लीज उन क्वेश्चंस को लेने दीजिए। मैं माफी चाहूंगा सर, आपका क्वेश्चन अभी निकल गया क्योंकि टीम ने फिर दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चंस पोस्ट कर दिए थे। सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर दैट। सो आगे जैसे ही आपके क्वेश्चन पे आता हूं तो आपको बताता हूं जी। तो क्वेश्चंस का सीक्वेंस अब मुझे छोड़ना पड़ेगा जी क्योंकि समय कम है और क्वेश्चंस अधिक हैं, तो छोटे छोटे में मैं क्वेश्चंस आपके लेते चले जाऊंगा।
नीलम जी का जवाब मैंने दे दिया था। सदानंद जी, आपको मैं बता रहा था, पटना से आप हैं, 7 साल की एज है और समझ कम है थोड़ी सी, कॉग्निशन की कमी जैसे आप बता रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा डिटेल्स और चाहिए होगी सदानंद जी कि क्या केवल समझता कम है या कि बोलना, इंटरेक्शन, ये चीज़ें भी कम है। कई बार होता है बच्चा बोल पूरा रहा होता है लेकिन समझदारी की ही केवल कमी होती है। मुझे थोड़ा सा डिटेल इस चीज़ में बताएं क्योंकि उस अकॉर्डिंग मैं फिर आपको गाइड कर पाऊंगा। पीयू जी, आपने पेशेंट कोड मेंशन किया है और लिखा है सर मेरी बेटी 2 साल की है। वो सर बिल्कुल पीयू जी, मैंने आपको भी डिटेल थोड़ी सी दी और बाकी आगे की जानकारी आपको मेरी टीम प्रॉपर प्रोवाइड करेगी। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है मैरी जी। We are taking medicine for my 6 years old child for past 4 months. I can see visible changes in sleeping issues. I want to know how can we improve attention and concentration. Mary ji, please, you have shared the patient code and you want to increase the concentration and attention of your child. Please share a small video of your child, and it's good to know that you are having some improvements. We definitely will be guiding you in regards of the attention and concentration also. A bit of part on the ABA and bit of dose adjustment of the medication of what to be given in the evening time and what to be given in the daytime. So please contact my team for that and you will be guided completely in that regards. So going ahead, uh, the next question is, so my son is 5 years old. He has word and he didn't make conversation and speak like robotics, and he has no sense of potty and susu. Sir, please guide me. Amolji, actually what happens is toilet training is something which develops as a conditioned reflex in our bodies. And for that, the coordination of conscious and subconscious is once again very essential. Since he's not potty trained and he's a bit robotic, maybe a child generally becomes robotic when we do more of occupational therapy for the child. Occupational therapy is not bad for severely autistic children, but yes, definitely when we talk about occupational therapy, OT is something which needs to be done in phases and should not be done too long. Gradually, a child has to be transformed from OT towards ABA. So maybe it was due to a longer duration of OT that the child became robotic. Please share how long did you went for this OT and all, and also share with us what all has been done on the psychotherapeutic front. And don't worry, there are methods with which the conscious subconscious coordination can be improved. A bit of Ayurveda and a bit of psychotherapy. And Veena ji, have done some. My daughter 6 is GD, non-verbal. Your treatment is on, but her gut issues, undigested motion, skin is dry. We just discussed. Veena ji, I suppose. And going to the next question. सर मेरा बेटा 4 साल का कंप्लीट हुआ है. ही हैज़ विजुअल इश्यूज. प्लीज सुजेस्ट हाउ कैन आई ट्रीट हिम. तो 4 साल का आपका, जैसा कि आपने बताया, कंप्लीट हुआ है बेटा, उसके विजुअल इश्यूज भी हैं. और विजुअल इश्यूज किस तरह के हैं मैं वो जानना चाहूँगा मैम. अगर किसी प्रकार का कोई आपने आई स्पेशलिस्ट के पास चेकअप करवाया है उसका, मुझे प्लीज़ शेयर कीजिए क्योंकि विजुअल इश्यूज की मुझे डिटेल चाहिए होंगी. रिपोर्ट्स आप शेयर कीजिए. डेफिनेटली हम आयुर्वेद में जो भी चक्षुष्य औषधियाँ बताई गई हैं उनके बारे में आपको गाइड करेंगे जिससे आपका बेटा लाभ उठा सके. और आपने इसके बाद हम आगे चलते हैं. My daughter will be 7 tomorrow. I bought the supplement a month ago and I have not been able to give it to her because she refuses to take. I put it in chocolate and pancakes before I fry. ऐसा नहीं है मैम, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए. You need not you can say cook it in pancakes and all. Share the details of the supplements you are taking. There are multiple flavors of most of our supplements. If your child is not enjoying one of the particular flavors, the flavors can always be changed. So don't worry, we will change the flavors for your child. And going ahead, you mentioned my daughter will be 7. Yeah, we just took your question. And then Alok ji, sir, our son treatment is going on from ND care. Even after 6 months of treatment, we can't see much progress. He has gut issues. Well, recently he has some issues with walking. We went to treatment for the same in allopathy and emergency. Please advise if there are side effects of stopping any medicines during allopathic treatment.
Alok ji, once again, as you have mentioned that there is a treatment going on, we will like to take the patient code, and the age is 6 years. The age of the child is very important for us, Alok ji, over here, because if we have the age, then we can guide you. And again, when we are talking about progress, and when we feel that yes, there are areas where we are having progress and there are areas we are not having progress, we need to have some further details, Alok ji, then. So the helpline number is there in front of you. Please share the areas of concern. If you are taking some allopathic treatment for him, you should reduce the Ayurvedic dosage of the medications. Don't omit them completely. Take the medications in some lesser dosage, but do not omit the medicines completely. That won't be good for him. And then we have Mr. कासिफ खान सर, मेरा बेटा 9 साल का है, उसको जो बोलना बोलेगी वो नहीं बोलेगा, उसका जो मन है वो बोलता है, आई कांटेक्ट नहीं है, नहीं बना पाता, अपने से लिख नहीं पाता। तो कासिफ जी, मैं ये चाहूँगा, जैसा कि 9 साल का बेटा हो गया है, देखिए कुछ देर की है हमने आने के अंदर, लेकिन अभी भी हमारे पास 3 से 4 साल हैं उसके कंप्लीटली एडल्ट होने से पहले, जहाँ पर हम कुछ ABA के इस्तेमाल से और कुछ हर्ब्स के इस्तेमाल से उसको बेटर कर सकते हैं। क्या हम उसको पूरा ठीक कर सकते हैं, ये देखने के लिए, क्योंकि वो 9 साल का है, हमें उसके वीडियोस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमारे साइकोथेरेपिस्ट से उसको एवेल्युएट करवाना पड़ेगा। सो प्लीज़ आप मेरे साथ जो डिटेल्स हैं वो एक बार शेयर कर दीजिए। हम आगे चलते हैं, और आगे है, माय सन हैज़ ऑटिज्म 4 years, ही इज़ नॉन वर्बल एंड डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ऑर्डर्ड मेडिसिन ब्रेनोवार एंड मुक्ता पिष्टी। क्वेश्चंस आगे भी आपके हैं, लेकिन मैं एक दो नंबरिंग वाले क्वेश्चन के बाद आज आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। रुपेश जी, आप लिखा है, आवर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुजेस्ट 1/4 part of Sizodon. Is it safe with our herbs like Brenoir and Breno? See, Rupesh ji, I would like to understand why are we willing to give Sizodon? If the child is having some seizures, it is understandable. If he's an epileptic child, we can then think about giving some Sizodon or something like that. But the most important thing to understand is Sizodon is a medication which is too strong, having too many side effects, to be given just for controlling of the hyperactivity. If seizures are there, then it's understandable. Then I would definitely think about guiding you to go for it. But without seizures, please do avoid it. That is my suggestion. Going ahead, further, there is a patient code which you have mentioned, and a lot of questions are still over there, and I really appreciate you all joining us, sharing your questions with us. But since I just requested you that the number of questions are more, the time we are running out on, and there are some general things to be discussing with all of you before I leave for the day. So I'll be going for some general things which are very important for all of you. See, the first thing in autism treatment is acceptance. Many a times we are not ready to accept that the child is having autism. The second important thing, once we know he's having autism, is choosing the right kind of doctor. Many a times we run after miracles. We go to quacks. We run after doctors who are claiming huge things and who are actually not doctors. And the third important thing to understand is single-handedly, herbs will not be able to do everything. If you are not doing and not putting in your side of efforts, still the herbs will give some changes, some positive changes there in the life of your child. But if you really want your child to come out of autism, it's only and only possible if you as parents, are putting in the efforts in regards of psychotherapy, the ABA part, where we guide and we train the parents. Now, when I generally guide the parents that please go for psychotherapy, what the parents make a mistake is they will take their child, they will put the child in a psychotherapy session or a special school, and then they will tell us, see, they are doing everything for our child. Please do remember, if you want your child to come out of autism, I appreciate any kind of psychotherapy that you're getting done at any center. You can go for it. There is no harm in that. But then the psychotherapy which we are currently talking about, which can change the life of your child, which is essential for your child, is the psychotherapy which you do as parents for him. Basically, when we are training the parents.
It is the parents who need to be trained and then following those techniques with your child. It is more on how to interact with your child, how to behave with your child to bring the optimum out of your child. So my sincere request with all of you who have started treatment with us or who are planning to start treatment with us, अच्छे से समझिए. Try understanding the concept. It is Ayurveda and psychotherapy. And along with that, a bit of spiritualism. Those who have met me always know that the superconscious, that is something which I always talk about. So the conscious, the subconscious, and the superconscious. The superconscious, there's a bit of spiritual aspect of our treatment where we guide the parents to be more spiritual according to their faith during the treatment when it is going on. So all these things are to be kept in mind if you are coming to us for treatment. What we can assure is, be it the poorest of poor, be it the middle class, or be it the richest of rich, we have something for every one of you. The most important is when we talk about autism and when we plan to bring children out of autism, it's not about merely selling of certain medications to you that is required. Try to follow the concepts. If you get a chance to meet me when I am over here in India or when I am having my patient interactions in US, Canada, UK or somewhere, please ask all your questions, resolve all your queries, and once you have understood the concept, please give your child the time that your child deserves. Take a bit of training from us, take a bit of time for your child, and you will definitely see the change. And if any kind of online treatment is not giving you faith, even if you are unable to develop a faith on us also as doctors sitting far away from us, you're always welcome to visit one of our centers. So इसी उम्मीद के साथ कि परमात्मा सभी ऑटिस्टिक बच्चों को जिनके बारे में कि आज हम ज़्यादा बात कर रहे हैं शीघ्र ही एक नॉर्मल जिंदगी दे, मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आपसे आज्ञा चाहूंगा. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे और इंडियन पेशेंट्स के लिए शुभ रात्रि. नमस्कार. Empowering lives. Group activities for autism at ND Care Nirogam Private Limited. A very marked problem which is being faced by majority of autistic kids is socialization. The children, they do not perform up to the expectations of their parents, the society when it comes on the part of social interaction with other children. And that is why, keeping this in mind, we at our Wrist Push Center Chandigarh go for various social activities. Inspired by the rich culture of Amritsar, we are rooted in tradition and diversity. Drawing energy from the vibrant city of Chandigarh, we embrace progress and inclusivity at ND Care Nirogam. Why stay at ND Care Nirogam for best results in autism? Ayurveda, Panchakarma, psychotherapy, ABA, OT and speech therapy, yoga and naturopathy, group activities, outdoor activities, all under one roof. Welcome to ND Care Nirogam, where we believe in creating a supportive community for individuals with autism. Today, we are excited to share how our carefully crafted group activities are making a positive impact on the lives of those we serve. At ND Care Nirogam, our team is dedicated to designing activities that cater to the unique needs of individuals on the autism spectrum. Our group activities are more than just fun. They are therapeutic and designed to foster social skills, sensory integration, and overall well-being. Our therapies provide a non-verbal way for individuals with autism to communicate and express themselves. It's amazing to see the creativity that unfolds during these sessions. Exercise is not only beneficial for physical health, but also for emotional well-being. Our group exercise sessions focus on building strength, coordination, and social skills. Specialized Panchkarma therapies at Wrist Push.
बाद बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। उसमें आई कॉन्टेक्ट आ गया है, अंडरस्टैंडिंग आ गई है। फर्स्ट पंचकर्मा से ही दिखने लग गया था कि गोकुल में थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है, एक आधे वर्ड्स भी बोलना शुरू कर दिया था। 5वीं में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई है, उसमें इमोशंस आ गए हैं, वो कुछ बातें अंडरस्टैंड भी करने लगी है। मेरे बेटे की अंडरस्टैंडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। You can see our therapists really improved the understanding of autistic kids. पहले शुरू में मेरा बच्चा चीखते थे, हर टाइम अचानक चीखते थे, हर टाइम चिड़चिड़ापन रहते थे, हाइपर था, बहुत ही हाइपर था। मेडिसिन लेने के बाद उसका ये चिड़चिड़ापन, एग्रेशन बहुत ही कम गया है। मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्मा भी दिया है और साथ साथ में साइकोथेरेपी भी चल रहे थे। तो ये साइकोथेरेपी, पंचकर्मा और मेडिसिन लाके कुल मिला के मेरा बच्चा अभी बहुत ही बेटर है। You can see our therapists really improve the hyperactivity of autism kids. The Panchkarma therapy here, which has Shirodhara and Nasya in it, and it is really recommended, very relaxing, and everybody and whosoever needs it must go through it. हम लोग अपने बेटे के लिए आए हुए हैं यहाँ पे आयुष्मान मंडल, जिसका उम्र लगभग 14 साल है। तो यहाँ हम लोग पंचकर्मा थेरेपी लिए। यहाँ का माहौल इतना फ्रेंडली, डॉक्टर, स्टाफ सारे कुछ बहुत अच्छे लगे। पहले ये ना बोलती थी ना कुछ समझती थी, लेकिन जब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। I came in contact with Dr. Navdeep Sharma regarding my son Shritik. So he is 3-year-old and he is having speech delay and he is having some ADHD behavior. It was a good experience. But one thing I can say for sure that my son's sleep routine is pretty much better than before. We came to this center, had an appointment with the doctor. We had a great session with him. He has immense knowledge about autism. He is specialized in autism and Ayurvedic treatments. The therapies were done very well, and the housekeeping and everything was clean. The rooms are clean, so we had a good stay, good interaction with the doctors and therapists. So overall, it was a good experience. उसका पंचकर्मा हुआ तभी उसमें जो हाइपर एक्टिविटी था उसमें हमें बहुत फ़र्क नज़र आया, और उसकी स्पेशली जो स्लीपिंग साइकिल थी वो उसकी एकदम से सेट हो गई। जैसे वो रात में पहले हाइपर होकर उठ जाता था, अभी वो भी उसका बंद हो गया, अभी उसको स्ट्रेट स्लीप मिलती है। तो हमारे बच्चे की बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। पहले तो हमारा बच्चा बात भी नहीं करता था, कुछ समझता नहीं था, अब इसमें स्पीच भी आई है, अंडरस्टैंडिंग आई है। At NDK Nirugam, we are committed to creating a supportive and inclusive space for individuals with autism. Our group activities are designed to empower and enrich lives, promoting social connections and overall well-being. Now these activities are one of the most important part of the treatment. Once we talk about a perfect social interaction that can only happen when social activities are being planned. If you are looking for a place where your loved ones can thrive, come join us at NDK Nirugam. Together, let's empower lives and build a brighter future. Help thousands of children around the world to recover successfully. He believes in the holistic healing power of Ayurveda, addressing the root cause of autism rather than just treating the symptoms.